guest today is a civil servant by profession, but he chooses to seek out the divine in different forms. He's the author of the book called The Physics of God. We are delighted to have on our show Kartikey Singh. Kartikey, welcome to the program. Thank you. Now, being a civil servant working with the railways and a vigilance officer, you put the fear of God in people. Yeah. What is your relationship with God? See, everybody has a relationship with God. My relationship is based on certain dreams which I had in my teenage. Now I don't accord that much importance क्योंकि वो आना बंद हो गए. But I joined all those tidbit pieces of those dreams together and tried to put them in a logical What were the whole. kind of dreams? Because normally teenagers जब सपने देखते हैं तो you know it's about romance or Yeah. about a future for themselves. Maybe it may be an unfortunate thing for me. लेकिन So what did you see God in your dreams? No, or no, what? no, no, no. कुछ चीज़ें ऐसी जो कि मुझे ऐसे सिग्नल देती थी कि रियलिटी कुछ इस तरीके की है, जो कॉस्मिक रियलिटी जिसमें हम जी रहे हैं, जिसको हम सही समझ रहे हैं या आधा अधूरा सही है या पूरा सही है, हमें नहीं मालूम, वो कुछ इस तरीके की है. उसका नेचर, उसका स्वरूप, उसका स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर, वो चीज़ें आई और फिर उनको मैंने अपने तरीके से जॉट डाउन किया. वो चीज़ें मेरे साथ काफ़ी दिनों तक मेरे जहन में और कुछ पेपर्स पे पड़ी रहीं. फिर मैंने उनको वीव करना शुरू किया एक किसी लॉजिकल होल में, जिससे कि कुछ उसका फ्रेमवर्क समझ में आए मुझे. बट बाय द टाइम आई वाज इन माय यूथ एंड दोज ड्रीम्स हैड स्टॉप्ड कमिंग. पॉसिबली अगर वो गॉड का फेवर था तो वो फेवर आना बंद हो गया था. फिर उस समय तक मुझे प्योर फिजिक्स में बड़ा इंटरेस्ट था, कुछ नॉलेज भी हो चुकी थी पढ़ते पढ़ते जो भी. तो ये चीज़ें जो मैंने देखा था उस समय, जो मैंने जॉट डाउन किया था और जो बाद में नई एजुकेशन जो धीरे धीरे मैंने एक्वायर की थी, इनको एक सिंगल होल में मैंने पिरोना शुरू किया. और उसमें बहुत सारे ग्लिचेस थे, बहुत सारे होल्स थे. और वो जो स्ट्रक्चर मैंने खड़ा किया अपनी ओरिजिनल थीसिस व्हाट अबाउट द कॉस्मिक रियलिटी, वो थीसिस जो है बड़ी फ्रैक्चर्ड सी थी. उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो कि मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहे थे. वर्क करता गया उस पर, करता गया. इट टुक मी अराउंड अ डेकेड. और फाइनली जब वो पूरा होल जुड़ा मेरे दिमाग में, तो आई रोट दिस बुक. तो इसका निचोड़ क्या निकला? What do you think was the essence of the spiritual reality or the ultimate truth? ये भी बड़ा ट्रिकी है ये बताना कि एक लाइन में कि ये निचोड़ क्या है. ये एक थीसिस है जिसमें कि हमने मॉडर्न फिजिक्स के जो लॉज हैं, जो उनको जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको यूज़ किया है कॉस्मिक रियलिटी को और गॉड को समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए. फिजिक्स जो है एक ऑब्जेक्टिव साइंस है. वो चीज़ों को बाहर से देखता है. फिजिक्स हमेशा ऑब्जेक्ट को देखता है, ऑब्जर्वर को कभी नहीं देखता. जो देख रहा है, जो कॉन्शियसनेस जो देख रही है जिस ऑब्जेक्ट को, उस कॉन्शियसनेस को स्टडी करना फिजिक्स के एम्बिट के बाहर है. सिर्फ ऑब्जेक्ट को स्टडी करती है. मैंने क्या किया कि फिजिक्स के जो भी पैरामीटर्स जो किसी भी सिस्टम को डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेस, टाइम, मास, एनर्जी, मोमेंटम, उनके साथ एक पैरामीटर और जोड़ दिया. वो था कॉन्शियसनेस. अच्छा. चेतना. और इसको बाकी पैरामीटर्स के साथ एक तरीके से रिलेट करने की, उनमें एक कैनोनिकल रिलेशन बनाने की कोशिश की. वो रिलेशन बन गया. फिर ह्यूमन कॉन्शियसनेस को मैंने अपने तरीके से, जो भी मेरे पुराने पेपर्स थे और मेरी जो समझ थी, अपने तरीके से उसकी पीलिंग शुरू की. लाइक वी पील एन अनियन. उसके छिलके उतारने शुरू किए. तो मुझे लगा कि कॉन्शियसनेस जो है वो एक मल्टी लेयर्ड फिनोमिनन है. उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं. और जब हम कहते हैं आई, मैं, तो अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि मैं हूँ. ये मैं कोई एक चीज़ नहीं है. डिफरेंट लेयर्स हैं कॉन्शियसनेस की, वो सब एक साथ बोलती हैं मैं. तो उनको पकड़ने की कोशिश की अपने तरीके से.
और आइडेंटिफाई किया तकरीबन 7 layers, The 7 layers of 7 truth. layers of reality that we are. Yeah. So we as a human being participate in all these 7 layers. And what are these layers? For example, एक physical layer है जो कि हम physical world में participate करते हैं अपनी body के through. So our body is a representative of that physical layer. उसके बाद हमारे senses हैं. Senses का मतलब sense organs नहीं, senses, the process of data receiving. ठीक है, उनकी अपनी एक consciousness है, थोड़ी lower level की. Then mind, mind के ऊपर हमने ईगो को पाया. वो साइकोलॉजिकल ईगो नहीं कि हम बहुत ईगोइस्टिक हैं, उस तरह का वाला ईगो नहीं. अहम, मैं, आई सी दिस चेयर एंड आई सी दिस कप. These are 2 events of mental perception, right? But the I is common. Right. Right. So I is at the background. I is necessary prerequisite for these 2 events of mental perceptions. So I is little behind, little above, little bigger than the individual mental consciousness. Mental consciousness fleeting type की होती है. This I is little stable. That is the ego. That is you. But this is not the full story. I say I, Kartikey. इस I में भी बहुत सारी लोडिंग है. मेरी आइडेंटिटी की लोडिंग है, बॉडी, सेंसेस, माइंड, हमारे सारे परसेप्शंस, इन सब की लोडिंग है. इन सब के साथ मिल करके दिस I is perceiving this chair or table or cup. If you remove all these loadings, if you remove all those attributes that you think they are your own, then there will be some pure I. I, Kartikey, you remove this Kartikey and you stop at I. Now this is the pure I. This is not ego, this is pure I, because the person attributes are out. ठीक? Actually, इन कॉन्शियसनेस के ये जो लेयर्स हैं, इनको मैंने फिज़िक्स के जो पैरामीटर्स हैं, वेलोसिटी, मोमेंटम, एनर्जी, टाइम, स्पेस, इन सब के साथ जोड़ रखा था. जैसे फिजिकल वर्ल्ड है, तो फिजिकल वर्ल्ड को हम कई तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम स्पीड के दृष्टि से इसको डिफ़ाइन करना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल द फिजिकल सिस्टम्स which come under the speed bracket of 0 to speed of light in free space. This makes our physical system. Anything which goes beyond speed of light is not physical for me. It's beyond the ambit of physics. That's right. Right? तो ये स्पीड के पैरामीटर पे हमने फिजिकल वर्ल्ड को डिफाइन किया. कॉन्शियसनेस को मैंने एक पैरामीटर की तरीके से ले लिया. कॉन्शियसनेस, वी डू नॉट नो वेदर दिस टेबल हैज़ अ कॉन्शियसनेस और नॉट, लेकिन कॉन्शियसनेस को possibly equal to 0. This is also an equation, a parameter set to 0. But then that becomes a non-constant, and the moment you are trying to give a formula to anything, if you're talking about physics, then there is a need for empirical truths. There is not much space really for the assumed, the K factor or the X factor. You have to solve the equation for it to become This is very true, very true. That's why I have written somewhere in this book that basically this book is not about bringing God in the ambit of physics. It's about bringing physics in the ambit of God. Right. It's about changing the way we see the world using physics. Okay. Rather than other way around. I want that physics should include, if it has to go beyond a certain level, it has to include things which are not very fixed, which are fluid like a poem, which are uncertain, which are little irrational. How is this different from what scientists are doing all over the world, searching for the
boson particle or the God particle. Here in this book, I have taken my own existence, my own inner consciousness, my own way of processing it and observing my own consciousness as a laboratory. Right. There is no laboratory outside. There is a last chapter in the book, We the Secret. Acha. Yeah. So there is a actually I have put some 4-line stanza at the beginning of every chapter. So I want to read it out. Okay. So that the 10th chapter, We the Secret. Right. There is one small poem where doubts are taller than reply. So many ideas, nothing to buy. I'm lost in the darkness of knowledge. I'm the last book left to try. So, what I mean to say here, I'm also a book to be read. Right. I'm also a laboratory to be experimented in. I'm also inside, I'm also an object to be researched. And somehow, physicists have not seen this. We are so outwardly, we are always looking outward, right? That we are missing something which is very, very crucial, the observer. Its own structure, its way of observing, who is observing, what is behind that observer. There are many layers. In fact, there's a beautiful example that you've given where you said that God was very upset because. हाँ, yes. God ने जब इंसान को बनाया तो गलती से बहुत तेज़ दिमाग का बना दिया और उसका दिमाग इतना तेज़ चलता था कि वो कुछ भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कुछ भी खोज सकता था जी. कुछ भी आइडियाज़ क्रिएट कर सकता था, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट कर सकता है, कुछ भी डिस्कवर कर सकता था. और गॉड ने ऐसा सोचा नहीं था कि हम इस इंसानी दिमाग को इतना तेज़ बनाएंगे. बस बन गया. गॉड को ये लगा कि मैं अब इससे कहाँ इससे छुपूं, क्योंकि अगर इसने मेरे मास्टर प्लान को और मुझे भी जान लिया तो फिर ये भी गॉड जैसा बन जाएगा. There'll be no mystery left in the world. And there will be no mystery left. 100% explained cosmos. ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं था गॉड का बनाने का. Some irrationality, some uncertainty, something unknown, something which is to be probed और उसके बाद भी कुछ पता ना चले, ऐसा पोर्शन छोड़ के रखना बहुत ज़रूरी था इस यूनिवर्स को सस्टेन कराने के लिए. तो गॉड बड़ा चिंतित हो गया कि मैं कहाँ छिपूं और मेरी मास्टर प्लान कहाँ छिपे. सो एक एंजल ने गॉड से पूछा कि भैया आप क्यों चिंतित हैं इतना. तो उसने बताया कि हमने एक इंसान बनाया है जो कि जिसका दिमाग बड़ा ही तेज़ है और वो मैं पूरे यूनिवर्स में कहीं भी छिप जाऊंगा वो मुझे खोज लेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. द एंजल टोल्ड द गॉड दैट ह्यूमन माइंड इज ऑलवेज आउटसाइड लुकिंग, इट्स ऑलवेज आउटवर्डली. वो हमेशा बाहर देखता है, वॉन्डरर है, रेस्टलेस है, वो हमेशा बाहर देखता है. तो सबसे अच्छी जगह छिपने के लिए इसके माइंड के भीतर ही है, इसकी कॉन्शियसनेस, इसकी चेतना के भीतर ही आप छिप जाइए, ये आपको कभी नहीं पा पाएगा. तो गॉड अपनी पूरी मास्टर प्लान के साथ ह्यूमन कॉन्शियसनेस के डीपेस्ट कोर में, बॉटम में जाके छिप गया. एंड द वॉन्डरर ह्यूमन माइंड इज स्टिल थिंकिंग, वो बाहर ही ढूंढता रहता है कहाँ है गॉड. तो ये एक स्टोरी है, लेकिन इसमें ये सिंबॉलिक है. ये बताती है कि हम कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर लें, हमारी जो अंतिम खोज है, अंतिम तलाश है, वो अंदर जाके रुकेगी. बाहर की चीज़ें मदद करेंगी, ऑफ कोर्स मदद करेंगी. इस बुक में भी मैंने फिज़िक्स को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से, कैरियर की तरह से लिया है, मदद के लिए लिया है, सो दैट टू स्टार्ट माई एक्सप्लोरेशन. बट दिस इज नॉट द फाइनल स्टोरी. एट one point of time I have to leave the experimentative verifying nature of physics, जिसमें हर चीज़ को वेरीफाई करके और एक्सपेरिमेंट करके ही माना जाता है.
ये बेसिकली फ़िलासफ़ी में एक पॉजिटिविस्ट स्कूल था जो हर चीज़ को वेरीफाई करता था, और उसने वेरीफाइबिलिटी के टेस्ट बनाए थे कि कोई चीज़ सही तभी रहेगी, मानने लायक तभी रहेगी जब हम वेरीफाई करें उसको। ये अगर हम प्रॉफिट मोहम्मद की बात करें, जी। भगवान बुद्ध की बात करें, तो उनकी जो फिलॉसफी थी उसमें ख़ास तौर पे उन्होंने कहा था कि डोंट बिलीव समथिंग बिकॉज आई एम टेलिंग यू, बिलीव इट बिकॉज यू हैव प्रूव्ड इट फॉर योरसेल्फ। तो ये तो जो अवतार रहे हैं, जो महापुरुष रहे हैं, उन्होंने भी ये बात कही है। बिल्कुल ठीक है, बट प्रूविंग का मतलब एक्सपीरियंसिंग योरसेल्फ। राइट। Proving doesn't mean proving through an experiment empirically so that everybody else can see. Spirituality में proving का मतलब होता है proving to yourself. Right. And this is by experiencing. If you experience it, anything, any truth or any idea, if you experience it, then it's proven for you. आपने जब अंदर की बात, अंदर का जो ट्रूथ है उसको ढूंढने के लिए एक बाहर का कैरेक्टर क्रिएट किया, ज़म्पकज़ू। हाँ, नहीं, ढूंढने के लिए नहीं किया, दैट इज जस्ट कैरियर। जो भी मेरे थॉट प्रोसेस थे जी, उन थॉट प्रोसेस में जो भी एडी करेंट्स थी, जो एंटीथेसिस बीच बीच में पॉपअप होती थी, मेरा माइंड मेरे ही अगेंस्ट जो चीज़ें पॉपअप करता था, उन सभी चीज़ों को जोड़ करके मैंने एक कार्टून कैरेक्टर बना दिया, और वो पूरी बुक में मुझे ही निगेट करता चलता है, मुझे क्रिटिसाइज करता है, कहीं कहीं मेरे थीसिस पे कुछ कमेंट्स भी करता है। जो Why do you call him ज़म्पकज़ू? पता नहीं। कार्टून कैरेक्टर्स का नाम जो है irrational. Why did you think of a cartoon character, and are you trying to lighten the whole process? See, actually, मुझे ये लग रहा था कि the book is becoming little heavy. Right. So I wanted to add little bubbliness in the book. That's all. Nothing more than that. Yeah. लेकिन yes, in this whole process, I started liking things which are irrational, things which are inconsistent, things which are unpredictable, things which are uncertain. I started liking them. And do you think that is where the crux of spirituality really is? Yeah, or the very crux true. Of God because is? because वो सारे human behavior, वो सारे human thoughts, जिनको हम reason out कर सकते हैं कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा है, या under this given circumstances ऐसा होगा, then I'll do this. It's like an equation. Right. A computer can also do this. Human existence as a part of divine existence is different from the mechanical living only because of its uncertainty, unpredictability and inconsistency. In fact, book में physics में uncertainty का भी हाइजेनबर्ग लॉ है अनसर्टेनिटी का, उसको भी मैंने यूज़ किया है। फिजिकल वर्ल्ड में भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है, मोमेंटम, स्पीड, स्पेस, टाइम, एनर्जी की वैल्यूज़ को लेकर के, बट फिजिकल वर्ल्ड इज़ बाय एंड लार्ज सर्टेन, फिक्स्ड। अनसर्टेनिटी जो है वो सब एटॉमिक लेवल पर है या बहुत थोड़ी सी है। हायर लेवल्स जो हैं कॉन्शियसनेस के, उन पे ये अनसर्टेनिटी बढ़ती जाती है। अच्छा। This fundamental uncertainty increases, takes quantum leap as we go into the higher levels of consciousness. So do you think there is an entire process of unlearning what we have learned through our lives? To some extent, because you see a world in a certain way, you understand reality in a certain way, that this is real. But over a period of time, you think that no, this is not the only reality. It is something else, which is more real than this. Yeah, isn't this something that we have learned through our various texts, all the religious texts, or the ancient texts that have come to us? We talk about the concept of neti. Yeah. That this is not reality. This is not it. There is more. Yes, so, do you think this is a system that has come to us through thousands of years, Yes, and we very have true. somewhere forgotten it? We have, in fact,
if you talk about the philosophical traditions, Right. we have not forgotten it. अभी भी जो भी philosophy के student हैं वही literature पढ़ रहे हैं, जी. वही चीज़ें repeatedly हाफ की जा रही हैं, लेकिन somehow we have lost the essence. हम उनको पढ़ते हैं, उनको experience नहीं कर पाते. उसका Because रीज़न क्या है? वो entirely experiencing something is a spiritual process. It's Right. not an academic process. True. और spiritual process के लिए आपको अपने senses को या अपनी समझ को थोड़ा सा untrain करना पड़ेगा. It is trained in a certain way. उसको untrain करना होगा, उसमें थोड़ी सी irrationality डालनी होती है. Again, थोड़ा सा I'm using पागलपन. that word again and again, irrationality. Somehow I have fallen in love with this word. तो ये, yes, it's a process. This untraining or unlearning is the same thing. तो फिर उसके बाद जब आप धीरे धीरे उन चीज़ों को, जो सीखी हुई चीज़ें हैं, उनको हटाते हैं, तो उस वैक्यूम में कुछ और आता है. आपके लिए क्या आएगा उस वैक्यूम में, वो डिफरेंट होगा या हो सकता है, और मेरे लिए क्या आएगा वो डिफरेंट हो सकता है. That depends on the level ये of हमारे evolution. spiritual experiences हैं. They may be different for you and me. But certainly with every unlearning, a vacuum will be created and it will be filled with some other type of understanding. And this is a very beautiful process. This process is different for different persons. Even I can't claim that it is different for different persons, because I'll know my process, you will know your process. Do you really think that when one is expanding on a spiritual level, one loses one's innocence, or does one regain one's innocence and feels one, a sense of unity with the universe? तो जितना वो छल कपट है वो छूट जाता है. Usually, जब आप spirituality में अपने को expand कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी पेरिफेरल चीज़ें जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ी हैं, वो उनकी शेडिंग अपने आप होती है. बट स्पिरिचुअलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम मोरालिटी. राइट. वन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि एक चोर भी स्पिरिचुअल हो सकता है. एब्सोल्युटली. राइट. तो हम ये कहें कि स्पिरिचुअल ग्रोथ में नेसेसरली शुरुआती ही दौर में ग्रीड या बाकी सारे वाइसेस छूट ही जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं. हो सकता है नहीं छूटें, बट इट डजंट मीन दैट द पर्सन कैन नॉट ग्रो स्पिरिचुअली. कैन ग्रो. It happens that even in the rational world that we live in, we have to live with this irrationality. The idea is to recognize it, as you said, in the case of love, as one of the irrational factors. Yeah, actually, as I told you that I fell in love with irrationality, and everything, every human behavior, every thought process which is irrational started appealing me. So from the theoretical aspect of irrationality, I slowly switched to those human behaviors and tendencies which are irrational. For example, love. Craziness and madness in love. Here also what I found very intriguing was that you said that instead of just being a unifying force, which what most people think, you find your soulmate when you're in love, you talk about it being a destroyer of the inner jungle, the confusion, that Destroyer of what? of the inner confusion. You have talked about it somewhere, Yes. that when you talk about love, you're not just talking about meeting a soulmate, because there's always the divine joke that's going on. There is confusion and people are confounded by what happens, and that is where your next book is going towards, isn't it? And you're moving from fact to fiction, which is actually a metaphor Yeah. for reality, really. Actually, yes, this is a transition that I'm finding in myself also. So my work will also switch accordingly. Yeah. So working on this this new thing, the fiction, the spiritual idiot, is a tentative title. It's a good one. Thank you. So I found that love is something which is pretty irrational.
hence divine, hence spiritual, human, not mechanical, unpredictable, inconsistent, uncertain. So, do you find all these unpredictables to be really one of the attributes of God, which most people consider to be the ultimate truth, the ultimate reality, the ultimate rock in a sense, because it's the immovable? To me, ultimate reality is infinite uncertainty. Okay, that's well Yeah. said. So, if we want to take it as a truth, universal truth, I don't believe that we can have a word like universal truth, because truth is always individual. But if people want to say that this is a universal truth, well and good for, I mean, nothing wrong in this. To me, it is infinite uncertainty. And love has some pie of that uncertainty, some pie of that unpredictability, inconsistency, irrationality. That's why to me love is pie of that divine. Now, in this book, which is a work in progress, Yeah. The Spiritual Idiot, Idiot. you have these beautiful characters. There's Ryan, there's Aditi, some of the other characters. Yeah. Which are the characters that you personally identify? Ryan is the protagonist of Right. this character, and he will carry the story. He's a Catholic boy of Mumbai, and he will face a lot of trauma and a lot of job stress, and he will find his love and unfind it. And there is this entire process of he's in love with somebody who's in love with somebody else. Yeah, and there is a long chain. Yeah. And you know, this book also is going to tell that there is so much love. A is loving B, B is loving C, C is loving D, D is E, loving E. So there is so much love on this planet, and everybody is thirsty. Yeah. So it's not like A is loving B. There is a law and logic that B should reciprocate and love A, and there is a perfect story, full stop. No, it's not like this. From something which was so esoteric and abstract, which Yeah. you have tried to rationalize the irrational, what made No, you no, no, move I have towards not tried to rationalize the irrational. I have tried to glamorize the irrational. No, I'm talking about your first book, moving from that Okay, to your second book, which Okay. is an out-and-out fiction. okay. Why did you feel that you needed to do that? As I told you, mind is a wanderer. I'm also a wanderer. So I created some theoretical structures around irrationality and uncertainty. I found them as divine attributes in the reality. The more it is, the more divine, the more real a system is. So then I found that what is there in me which is divine? What is there in me which is special, which is non-mechanical, which is the real me? Then I found that all my irrational things, irrational thought processes, irrational tendencies, maybe they are divine. I chose love as one of them. There may be others. You know, at a very young age, you're so deeply into the spiritual. I was pushed to. by My dreams pushed me. No, I was not that kind. Okay. I was not over religious or over spiritual type of person. What were Somehow- your what did you imagine yourself to be when you grew up, before you had these dreams? Nothing specific. Okay. Nothing specific. I had not planned anything. Okay. They just came and they made me little upset. I wondered why. Actually, there is a question mark in every human being. In every baby, there is a big question mark about the reality outside. Right. Usually what happens, by repeatedly seeing the same thing, the baby forgets this question mark, the wonder. Yeah. Right. आप देखते हैं कि कोई चीज़ ऐसे है, कुछ
लाइट ऑन की गई और लाइट आ रही है और आपकी आंखें चमक रही हैं, या फॉर एग्जांपल सन से आपको हीट मिल रही है, एक अंदर का क्वेश्चन मार्क ये पूछेगा क्यों हीट मिल रही है? ठीक है, सनरेज आ रही हैं, पर हीट क्यों मिल रही है? पत्थर क्यों गर्म हो रहा है? फिजिक्स कैन नॉट गिव यू द कंप्लीट स्टोरी, लेट मी टेल यू। वो जो क्वेश्चन मार्क है, होता क्या है, बार बार हम देख रहे हैं उस चीज को, तो फिर हमको लगता है ये तो ऑब्वियस है, ये तो होगा ही होगा, या हम सवाल करने भूल जाते हैं। सवाल करना ही भूल जाते हैं। और वो रिपीटेड एक्चुअली हमारी जो जितनी भी लर्निंग है वो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन से होती है। बार बार हम उसी चीज को देख रहे हैं तो उसके अंदर का वंडर खत्म हो जाता है और फिर वो क्वेश्चन मार्क कहीं छिप जाता है। द मोमेंट दैट क्वेश्चन मार्क इवन इन द ग्रोन अप इज आउट, द होल वर्ल्ड विल बिकम अ वंडर, राइट। और फिर आपका वर्ल्ड व्यू, आपका देखने का नजरिया बिल्कुल अचानक बदल जाएगा। यूजुअली नहीं होता है, अगर होगा तो जरूर कुछ न कुछ आपको अजीब सी लगेगी ये पूरी दुनिया। So it's very important for all human beings to keep that question mark To alive. keep that question mark alive, and we should not hurry in answering every question, because there is, let me tell you, there is no final answer. But that sense of awe, That sense of awe, that sense of wonder is the soul of spirituality. वो अगर हमने खत्म कर दिया, अगर हमें सारी चीजें ऑब्वियस एक्सप्लेन्ड दिखने लगी, then we are a practical grown up normal human being, not very different from the computer. not very different from the computer. We take every input as given, ठीक है ऐसा। वो क्वेश्चन मार्क, उन ड्रीम्स ने उस क्वेश्चन मार्क को फिर से अलाइव कर दिया। That's all I'll say. Well, Kartikey, that's really one of the keys to spirituality. To spirituality, that question mark. That question mark. And we do hope that through your books and your articles that you keep writing in your blogs, that question mark remains alive for you and for all your readers. Thank you so much for being on our program and sharing this information. Thank you.